Namaskar dear children. Today we are going to do revision. Okay. All of you take your notebook and get ready to write the questions. I am going to write the questions on the board. Okay. Write the heading revision. Heading is revision. Comment number 1. 2 chapters are coming for the exam, that is Varsha Geet and Sankalp. Varsha Geet and Sankalp. अंग्रेजी में अर्थ लिखे. अंग्रेजी में अर्थ लिखे. Write the meaning in English. First one. Sangrah. First one is Sangrah. Second, न्यायाधीश. 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 Third, now. Third one is now. Fourth, next is the fourth one is आंगन. Fourth one is आंगन. Fifth, उज्ज्वल. Fifth one is उज्ज्वल. And sixth one is संध्या. सेकेंड वन समानार्थी शब्द लिखे. समानार्थी. समानार्थी शब्द लिखे means write the Hindi meanings. Okay. हिंदी मीनिंग्स लिखना है. फर्स्ट वन, मतवाला. मतवाला. सेकेंड, शोभा. शोभा. Third, तरंग. Fourth, आकस्मिक. Fourth one is आकस्मिक. Fifth one, मजदूरी. मजदूरी. Sixth one, जाड़ा. So this carries 6 marks. This also carries 6 marks. Okay.
So these are the अंग्रेजी में अर्थ and समानार्थी शब्द. अंग्रेजी में अर्थ English meanings. You have to write here English meanings. संग्रह का English meaning न्यायाधीश, नाव, आंगन, उज्जवल, संध्या. नेक्स्ट समानार्थी शब्द है मतवाला, शोभा, तरंग, आकस्मिक, मजदूरी, जाड़ा. Okay, now Roman number 3. Take down this, all of you, quick. Now Roman number 3. Roman number 3. Yes, next is विलोम शब्द. Next question is विलोम शब्द लिखे. विलोम शब्द लिखे. विलोम शब्द लिखे. Write the opposites. First one, first one is मुश्किल. खुशी, खुशी. थर्ड, दृढ़. Next, this carries 3 marks. Next, Roman number 4. बहुवचन रूप लिखे. बहुवचन, बहुवचन रूप लिखे. First one, गांव. First word is गांव. Second, पुस्तक. पुस्तक. Third one, लकड़ी. This also carries 3 marks. So Roman number 3 is विलोम शब्द लिखे. मुश्किल, खुशी, दृढ़. You have to write its opposites. Next is Roman number 4. बहुवचन रूप लिखे. गांव, पुस्तक, लकड़ी. Okay, you have to write the बहुवचन रूप. Now next. Next is उत्तर लिखें. Next is उत्तर लिखें. Write the answers. Answer the following. First one, न्यायाधीश, न्यायाधीश
किस गांव में रहते थे? न्यायाधीश किस गांव में रहते थे? किस गांव में रहते थे? Next question is, मेघों ने वर्षा की बूंदों का स्वागत कैसे किया? 2 marks for each question. So 2 question answers for 4 marks. Okay. Now 6th one. पूरा करे. First one. न्यायाधीश के पास डैश की पुस्तकों का अच्छा डैश है. Second, कड़ाके की डैश थी. वह डैश में बैठकर नदी पार कर रहा था. See children, पूरा करें. न्यायाधीश के पास डैश की पुस्तकों का एक अच्छा डैश है. कड़ाके की डैश थी. वह डैश में बैठकर नदी पार कर रहा था. So without seeing text, you have to fill this. Okay children, so write this. It carries 1, 2, 3, 4.
Again 4 marks. Okay. So children, read the questions carefully and do it. Okay. Thank you. Namaskar.